Good morning, dears. Today I am going to discuss about new topic sequence and series. Sequence and series. This is chapter number 9 according to NCERT for class 11. Class 11. What is sequence? First question is, what is sequence? Sequence क्या है? The numbers arranged in order according to a law or rule is called sequence. The numbers arranged in order according to law or rule is called sequence. So first of all, we have to know what is sequence. Numbers arranged in order according to law or rule is called sequence. Denoted as A1, A2, A3 and so on, AN and so on, where AN is nth term of the sequence. So A1 is first term, A2 is second term, A3 is third term. इसी तरह से ये AN क्या है? nth term of the sequence कहलाता है. And next thing, what is series? Series is denoted as A1 plus A2 plus A3 plus and so on plus AN. This is series. A1 यानी अगर हम इन नंबर्स को एडअप कर दें तो वो एक सीरीज फॉर्म करेगा. This will form a series. There are three types of series or progression. One is arithmetic progression or arithmetic series. Second one is geometric series or geometric progression. And third one is harmonic series or harmonic progression. In class 11th, there are only two types of progression. One is arithmetic progression and other is geometric progression. Harmonic progression is not in class 11th. So, what is arithmetic progression? You very well know about the arithmetic progression. In previous year in class 10th, you have already read about arithmetic progression. So arithmetic progression जिसे शॉर्ट में हम AP से डिनोट करते हैं. A series A1, A2,
A3 and so on, An is said to be is forms arithmetic progression if an minus 1 remains constant for all n greater than 1, for all n greater than 1 belonging to natural number. N is what? N is a natural number which is greater than 1. That means अगर 1 से greater number natural number रखेंगे 2 और 2 minus 1 1, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, ये difference constant होता है. This constant difference is known as common difference, usually denoted by small d. So A2 minus A1 A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, all are equal and equal to small d, which is common difference. If A1 is A, then AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. The general term or nth term of this AP, you had read in previous class 10th, nth term, इसे हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं. जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP, ये an से डिनोट होता है और दिस इज a plus n minus 1 into d. There are 4 variables. An means nth term, a means first term, n means common difference, n means number of terms, d means common difference. इन 4 में से कोई भी 3 चीज दी रहेगी तो चौथी चीज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. अगर मान लीजिए AP क्लोज हो रही, यानी nth टर्म सीरीज का लास्ट टर्म है जिसकी वैल्यू l है, तो उस केस में फार्मूला हमारा क्या आ जाता है? L equal a plus n minus 1 into d. L equal a plus n minus 1 into d. अब सपोज कीजिए कि हमें सीरीज में इंड से कोई टर्म फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? kth term of AP, A plus D, A plus 2D, and so on, L minus 2D, L minus D, L from the end. कैसे आएगा? इसे हम AK से दिखा देंगे. फ्रॉम दी एंड चल रहा है L minus K minus 1 into L minus K minus 1 into D. यहाँ पे भी आप देखिए 4 वेरिएबल्स हैं. AK यानी kth टर्म फ्रॉम दी एंड, L यानी लास्ट टर्म, K यानी नंबर ऑफ टर्म्स, D यानी कॉमन डिफरेंस.
इन चार में से कोई भी तीन चीजें हमें मालूम होंगी तो हम फोर्थ वन फाइंड आउट कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द थ्री वैल्यूज वी विल गेट द फोर्थ वन। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP, sum of n terms of an AP, a plus d, a plus 2d and so on, an or L, where L is a plus n minus 1 into d, is Sn equal n by 2 a plus L, और दूसरा फार्मूला Sn इक्वल n by 2 2a plus n minus 1 इंटू। अब इन दोनों फार्मूलों को भी ध्यान से देखिए, सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले हैं। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, a मीन्स फर्स्ट टर्म। इस फार्मूले में l है यानी लास्ट टर्म। इन चार में से कोई भी तीन चीजें अगर हमें मिलेंगी तो हम फोर्थ वन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ वन है d कॉमन डिफरेंस। चार में से कोई भी तीन वेरिएबल हमें मालूम है तो हम फोर्थ वन फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ वन हम इजीली फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो ये फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का है, ये भी हम लोग लास्ट ईयर यानी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। फिर क्लास 10th में हम लोग एक बात और पढ़े हैं, if A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, अगर तीन नंबर AP में है, this implies second term minus first equal third minus second, या twice of B is A plus C. Sum twice the middle is sum of the extremes. Twice the middle is sum of the extremes. या B is A plus C by 2. A plus C by 2. ये भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है जिसे भी क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ वी हैव टू कंसीडर एनी थ्री नंबर्स इन AP, इफ वी हैव टू कंसीडर एनी थ्री नंबर्स इन AP, then we have to always consider A minus D, A plus D with common difference D, with common difference D. Any three numbers, any three numbers. If we have to consider any four numbers in AP, then we have to always consider A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D with common difference 2D, with common difference 2D. If we have to consider any five numbers, then consider A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D with common difference D, with common difference. तो इतने फार्मूले हम लोग लास्ट ईयर यानी क्लास 10th में पढ़ चुके थे, जिनको मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों को फार्मूला ये एकदम क्लियर रहे। कितने फार्मूले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फार्मूला और है जिसे भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं,
कि if an is the nth term of an AP and Sn is the sum of n terms of an AP, an is nth term and Sn is sum of n terms of AP, then an is Sn minus 1। ये भी हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अगर हमें किसी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का एक्सप्रेशन मालूम है और हमें nth टर्म का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स के एक्सप्रेशन में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स के एक्सप्रेशन को हम हटा दें, यानी माइनस कर दें, तो वो क्या आएगा, nth टर्म ऑफ द एपी। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि क्लास 10 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे से हम लोग क्लास 11 की बातचीत शुरू करेंगे। Now moving ahead, अब इसके आगे की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन let the arithmetic mean of two numbers a and b be capital A. So A, capital A, B are in AP, अगर तीन नंबर AP में है तो हम लोग जानते हैं मिडिल का ट्वाइस द सम ऑफ द एक्सट्रीम्स हो जाएगा। ट्वाइस द मिडिल इज सम ऑफ द एक्सट्रीम। सो 2A इज व्हाट, A plus B, and arithmetic mean A is what, A plus B by 2. So the arithmetic mean of two numbers is the half of sum of the numbers. Arithmetic mean of two numbers is half of their sum. Arithmetic mean of two numbers is half of their sum. N arithmetic middle terms, N arithmetic middle terms, N arithmetic middle terms. Let A and B be any two numbers, and A1, A2, A3, A4 and so on An be an arithmetic middle terms. Let the n arithmetic middle terms of A and B are A1, A2, A3 and so on An. Then A1, A2, A3 and so on An, comma B
R in AP. R in AP. See here, A is the first term, B is the last term. Total number of terms are here, n in middles, and 2 are in extremes. So n plus 2 terms. Total terms are n plus 2. तो फार्मूला यूज करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. वी नो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमने कैपिटल लेटर से सबको नोटेट कर दिया है. बाकी सबके मीन वही है जो मीन हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. L क्या है हमारा, B है. A क्या है, स्मॉल a. नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल d ले रहे हैं. तो यहाँ से d की वैल्यू आ रही है b माइनस a बाई n प्लस 1. अब अगर हमें a1 फाइंड आउट करना है तो आप अच्छे से जानते हैं a1 क्या हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 1 a प्लस d. a2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d. a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d. एंड सो ऑन. an क्या हो जाएगा, a प्लस n. अब हम लोग d की वैल्यू रख करके हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि a1, a2, a3, a4 यानी जो मिडिल टर्म्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या हो रही है. अब सम ऑफ दीज मिडिल टर्म्स, अगर हम सम ऑफ दीज मिडिल टर्म्स करें तो इन सभी को हम ऐड अप कर दें. तो ऐड अप करने पे क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an. a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an. आप देखिए a कितनी टाइम्स जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, a n टाइम्स ऐड हो रहा है. तो a को n टाइम्स ऐड किए यानी a इंटू n प्लस. अब यहाँ पे d आगे, d कॉमन ले लीजिए, बच क्या रहा है यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू डी an. और ये दिस इज सम ऑफ n natural numbers, first n natural numbers. This is n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, and substitute the value of d. The value of d is b minus a upon n plus 1, b minus a upon n plus 1. So n plus 1 is cancelled out with n plus 1. n को कॉमन निकाल लीजिए, n कॉमन आ गया, a प्लस b माइनस a बाई 2. इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, n इंटू a प्लस b बाई 2 हो जाएगा. और a प्लस b बाई 2 उनका अर्थमेटिक मीन है. सो सम ऑफ n मिडिल टर्म्स between two numbers is n times of their arithmetic mean. Sum of n middle terms is n times of their arithmetic mean. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा. नोट इट डाउन.
moving ahead, some important rules या key points, key points. Key points. You have to note these key points by giving number 1, 2, 3, 4, and I am just telling these key points. First one, if we add a real constant to each term of an AP, then the sequence formed is also an AP. If we add a real constant to each term of an AP, then the sequence so obtained also forms an AP. आइए देखिए, सपोज कीजिए हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 ये AP चल रहा है, या A plus D, A plus 2D, A plus 3D, it is going on. So on adding real number K to each term of AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. Sequence so formed क्या हो जाएगा? A plus K, A plus D plus K, A plus 2D plus K, A plus 3D plus K, and so on. What is the condition of a sequence to be AP? या a series to be AP? The condition is the common difference. The difference of the term with its preceding term remains the same. That is known as common difference. So when we subtract this term, we have to subtract this term from this. It will remain D. This term from this, it will remain D. This term from this, it will remain D. So first term क्या हो जाएगा? First term D रहे, A plus K होगा, और common difference D. Common difference D. ये क्या है? एक AP फॉर्म हो रही है, क्योंकि आप आराम से कह सकते हैं A2 माइनस A1 D आएगा, A3 माइनस A2 D आएगा, A4 माइनस A3 D आएगा. हर एक टर्म जब ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो उसका डिफरेंस D आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस है, तो उस केस में सीक्वेंस क्या होती है? AP होती है. तो फर्स्ट key point is on adding real number K to each term of AP, then the sequence so formed is also an AP. अब second key point. Second key point is on subtracting real number K to each term of AP, then the sequence so formed is also an AP. The sequence so formed is also an AP. First term is A minus K, common difference is D.
First term is A minus K, common difference is D. This means if we add or subtract a real number to each term of an AP, then the AP to the sequence so formed will be an AP. Third key point, if we multiply a real number K to each term of AP, then sequence so formed is also an AP. If we multiply a real number K to each term of an AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on, then the sequence so formed AK plus DK यहाँ पे ध्यान रखिएगा नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर ध्यान रखिएगा। AK plus 2DK, AK plus 3DK and so on। ये भी क्या होगा? ये भी एक AP है। ये भी क्या है? एक AP है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? फर्स्ट टर्म AK, कॉमन डिफरेंस DK, कॉमन डिफरेंस DK। Same sort of thing, if we divide each term of an AP, if we divide each term of an AP with a real number, non-zero real number K, then the sequence so formed is also an AP। अब उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? A by K, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? D by K। आप लोग करके देख लीजिएगा। क्या मैंने बोला? If we divide each term of an AP with a non-zero real number K, then the sequence so formed is also an AP। Then the sequence so formed is also an AP। इसी तरह से आप लोग बना के कर लीजिएगा। A by K, A by K plus D by K, A by K plus 2D by K। इसी तरह से आप लोग बना के कीजिएगा। फर्स्ट टर्म A by K हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस D by K आएगा। Now moving ahead, fifth one, if we add or subtract the consecutive terms, the corresponding terms of two APs
then the sequence so formed, then the sequence so formed is also an AP, is also an AP. अब हम दो AP ले रहे हैं, A1 plus D1, A1 plus 2D1, A1 plus 3D1 and so on. And second AP, ये फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP, ये सेकेंड AP ले रहे हैं हम लोग, A2 plus D2, A2 plus 2D2, A2 plus 3D2 and so on. On adding these series, on adding corresponding terms of two APs, the first term of sequence so formed, the first term of AP so formed is A1 plus A2 और सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस, ठीक है, ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? दिस विल बी D1 plus minus D1 plus minus D2. मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आप लोग चेक कीजिएगा, अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ फॉर्म क्या होगा, इसे आप लोग खुद चेक कीजिएगा. और मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, सीक्वेंस एपी नहीं होगा, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म इज नॉट एपी. So hopefully you enjoy well. We will meet with some more concepts in next part. Till then, goodbye. Thank you.